अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो we are going to apply distance formula for finding out the distance between the 2 points which will lie on the axis, that is x-axis and y-axis. So let's say we are having a point P which lies on the axis, x-axis. अब जब ये point P जो है वो x-axis पे lie करेगा तो इसमें से जो एक coordinate point होगा वो 0 हो जाएगा. So if it is lying on the x-axis, this means इसका जो y coordinate है वो 0 हो जाएगा. Let's say we are having one other point which lies on the y-axis. जब y-axis पे point lie करेगा तो उसका जो x coordinate है वो 0 हो जाएगा. Here a and b can be any number क्योंकि point p और q axis पे कहीं भी lie कर सकते हैं. Our distance formula will remain the same. Let's recall the distance formula. Distance is denoted by d since we are finding out the distance between the points p and q. So it will be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now let's read out the question and we will understand the question first and then we'll be moving forward for applying the distance formula on examples. Okay, let P be the point on the x-axis. Let's say this is the point P which lies on the x-axis with the x coordinate as A. So जब कोई point x-axis पे lie करेगा तो उसका लाजमी जो है y जो coordinate है वो 0 हो जाएगा और उन्होंने x coordinate की जो value दी है वो A दी है, right? And Q be the point on y-axis. Q जो है वो y-axis पे lie कर रहा है anywhere on the y-axis. और जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है जबकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है बी, राइट. सो अगर उन्होंने ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी होगी तो हमें ऑर्डर्ड पेयर अपना कंप्लीट करना होगा एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला इन फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू. ठीक है, पहले हम अपना ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन. सो आवर पार्ट 1 इज question number 2 it is, and part 1, let's say here they have given the value of a as 9 and b as 7. So first we will complete the ordered pair. A is the coordinate of point P, x coordinate of point P, तो उसका जो y coordinate है वो 0 हो जाएगा. And B they have given it is the y coordinate of point Q, तो उसका x coordinate जो है वो 0 हो जाएगा. So we have completed our ordered pair. Now we will apply the distance formula. Since we are finding out the distance between P and Q, so we'll write distance of P and Q will be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here we are having this as x1, y1 and these 2 points as x2, y2. Let's apply the distance formula. Square root of x2 here is 0, so 0 minus 9 whole square. Y2 here is 7, 7 minus 0 whole square. Now this is just now the calculations. Minus 9 whole square plus 7 square. Minus 9 square means 81, 7 square means 49. So it will be square root of 130. So this is how you are going to find out the distance between the 2 points जब उसके x coordinate या y coordinate दिए होंगे. Let's move forward with one more question. Second part is given to us as a is equal to 2 and b is equal to 3. Again we will complete the ordered pair. Ordered pair complete करते हैं. p क्या बन जाएगा 2 0 बिकॉज उसने ये दिया है कि ये x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है तो ऑटोमेटिकली उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा सिंस ही हैज़ मेंशन्ड दैट दिस पॉइंट P लाई ऑन दी x एक्सेस. नाउ इस B के लिए ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करते हैं. ये B पॉइंट किस चीज़ का है? इट इज़ दी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड Q हेयर लाइज ऑन y एक्सेस, तो उसका जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा और 3 जो है उसने y कोऑर्डिनेट सवाल में दिया हुआ. Now we'll find out the distance between these 2 points PQ. Let's write down the distance formula.
It is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance will be, here it is going to be as x1 y1 and x2 y2. Let's apply the distance formula. So it will be square root of 0 minus 2 whole square plus 3 minus 0 whole square will become 2 ka square and 3 ka square. 2 square is 4, 3 square is 9. So the distance between the 2 points P and Q will be square root 13. Hope you understand the sum. Let's move forward with the third sum. In the third part, they have given x coordinate of point A as minus 8 and y coordinate of point Q as 6. Let's complete our ordered pair first. Point P का ordered pair क्या बन जाएगा? minus 8 0 and point Q का ordered pair क्या बन जाएगा? 0 6. Now let's find out the distance between the 2 points. Distance formula will be as square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here this is x1 y1, this is x2 y2. Let's apply the distance formula between the point P and Q. It will be, the value of x2 is 0 and the value of x1 is -8. तो ये वाला जो माइनस है और इस फॉर्मूले के माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस एंड 8 होल स्क्वायर. सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 0 होल स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूले का माइनस विल रिमेन देयर. इस पॉइंट का जो माइनस है वो फॉर्मूले के माइनस से प्लस हो जाएगा. सो इट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. 8 square is 64, 6 square is 36, so it will be square root of 100, which will be plus minus 10, but we'll only write plus 10 because distance is always taken as positive number. So we'll moving forward towards the fourth part of the same sum. So A is equal to -2 and B is equal to -3, right? So यहाँ पे हमने क्या करना होगा? Again we have to complete the ordered pair. ये उन्होंने क्या दिया हुआ है? X कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट P का. तो जब X कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पॉइंट P का और उसने बताया कि पॉइंट P लाइज ऑन द X एक्सिस, तो दूसरा जो Y वाला पॉइंट है वो 0 हो जाएगा. ये उसने दिया हुआ है Y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q और उसने बताया हुआ है कि पॉइंट Q लाइज ऑन दी Y एक्सिस. सो जब वाई एक्सिस से पॉइंट पी क्यू लाई करता है तो उसका एक पॉइंट 0 हो जाता है और दूसरा पॉइंट उसने दिया है. सो अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. विल बी राइटिंग डाउन द डिस्टेंस फार्मूला. द मोर यू विल राइट डाउन, वी विल प्रैक्टिस, द सूनर यू विल बी memorizing this formula. So point 3, here it is x1 y1, it is x2 y2. So it will be, here the value of x2 is 0, so 0 ये वाला minus और formula का minus will become plus. It will be +2 whole square and -3 and -0 whole square. Here it will become 2 square plus -3 square. It will be 2 ka square is 4, 3 ka square is 9, so D is equal to square root of 13. Hope you understand the sum. Let's move forward with the second last part, that is the fifth part. Here A is equal to square root of 2 and B is equal to square root of 1. Let's complete the ordered pair. P point lies on x axis, जिसका x coordinate उसने दिया हुआ square root 2, so उसका y coordinate 0 बन जाएगा. Q point lies on y axis, उसका x coordinate 0 बन होगा और y coordinate उसने दिया हुआ है 1. Now we'll be finding out the distance D between the points P and Q. So it will be x square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It will be, let's apply it on the given sum. This is x1 y1, this is x2 y2. Let's apply the distance formula. It is 0 minus square root 2 whole square and y2 here is 1, so 1 minus 0 whole square. Now it will be -2 ka square root whole square and 1 ka square.
ये स्क्वेयर जब माइनस पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब 2 पे जाएगा तो इट विल बिकम्स 2 + 1. So it is square root of 3. Let's apply the distance formula on the last part of the same sum, that is the sixth part. Here a is equal to -9 and b is equal to -4. Let's complete the ordered pair. P point lies on the x-axis, जिसका y point 0 हो जाएगा. Q point lies on the y-axis, जिसका x point 0 हो जाएगा. So let's apply the distance formula. D is equal to distance between P and Q, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let's apply it on the sum. This is x1, y1. This is x2, y2. So distance will be D is equal to the distance between the 2 points P and Q. Here x2, the value of x2 is 0. This minus and the formula is minus into minus become plus 9 whole square, and this is -4 minus 0 whole square. So it is D 9 square and -4 ka square. Now this is just further calculation. 9 square is 81, 4 square is 16, so it will be 90 square root of 97. This is the answer. Hope you understand the sum. ठीक है, आपने जिस सम को ध्यान में रखना है कि पॉइंट पी और क्यू कहाँ लाई करें. इफ़ दे लाई ऑन एनी एक्सेस, दिस मीन्स दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंट जिसमें कोई एक पॉइंट ज़ीरो होता है. अब अगर एक्स एक्सेस से पॉइंट लाई कर रहा है, दिस मीन्स उसका जो वाई पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा और ए की जो वैल्यू है वो उसने क्वेश्चंस में दी हुई है. Similarly, if the point lie on the y-axis, this means उसका जो x पॉइंट है वो ज़ीरो होगा और जो y पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट है, उसकी उसने वैल्यू आपको दी हुई है. And then you are going to apply the same distance formula in finding out the distance between the 2 points. Hope you understand the sum. Thank you so very much. Allah Hafiz.